हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आज आमे पढ़िबा सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग नॉर्मली आमे बिजनेस रे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करबा पई दुईटा टाइप रो सिस्टम अछि, सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम कोन? The single entry system is a simple, informal, and incomplete method of bookkeeping where each financial transaction is recorded only once. Single entry system रे जो ट्रांजैक्शन गुड़ा का हमें रिकॉर्ड करिबा केवल थरे ही रिकॉर्ड करिबा। थरे मतलब होची कि सपोज गोटे एग्जांपल मु नउची, गोटे छोट कैफे अछि, तो कैफे रे तार ओनर कस्टमर को कॉफी प्रोवाइड कला, गोटे कप कॉफी प्रोवाइड कला। तो सी तार बुक्स अकाउंट रे कौन एंट्री करिवो? ओनर तार ना सी तार कॉफी एतिकी प्राइस रो सेल कला, ओनली कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कला। से तो रिकॉर्ड कोनी ना तार स्टॉक केते कमिला, माने कॉफी सेल हे गला तो आउ केते रहिला कि आउ केते माने स्टॉक रिलेटेड से किछि भी एंट्री करला नाही, ओनली तार केते सेल हैला से सेतिकी ही रिकॉर्ड करला। तो एठी को होची ना गोटे अकाउंट ही अफेक्ट होची, जोटा की होचे कैश अकाउंट। एठी गोटे अकाउंट अफेक्ट होची, तो एटा हमर को एंट्री रे जिवो ना सिंगल एंट्री सिस्टम रे जिवो। एबे तार फीचर्स देखिबा कोन कोन अछि। वन एंट्री per transaction. Instead of recording the dual effect of every transaction, like in the double entry system where you have a debit and a credit, agu ame padiba double entry kon. The single entry system only records one side of the transaction. जेमिति मु कहली, ओनर कॉफी सेल करूची कस्टमर को, ओनली तार सेल केते हैला, माने कैश केते तार आसिला से सेतिकी ही रिकॉर्ड करूची। तार स्टॉक केते कमिला ताकू से रिकॉर्ड करला नाही। तो एठी गोटे अकाउंट ही रिकॉर्ड रहूची। तो सेथि पे आरो फीचर होची कोन ना वन एंट्री पर ट्रांजैक्शन। फोकस ऑन कैश, इट मेनली ट्रैक्स कैश रिसीट, means money coming in, and cash payments, money going out, in a simple book called a cash book. Single entry system रे normally businesses cash book ही maintain करे, तार केते कैश आसिला केते कैश गला per day basis रे से ताकू ही mainly focus करे थाए। Incomplete records, it often only maintains a cash book and the personal account of debtors, customers who owe money, and creditors, suppliers you owe money to. It usually ignores detailed tracking for assets, liabilities, or many expenses, leading to incomplete records of the business's overall financial health. एटी कोची की सिंगल एंट्री सिस्टम रे कौन से रिकॉर्ड करे ना कैश बुक मेंटेन करी थाए, माने कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन गुडा का रिकॉर्ड करे, आ पर्सनल अकाउंट मेंटेन करे, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल ड्रॉइंग्स आ किछि भी से मेंटेन करी न थाए। काहेकि ना एठी हम जानना तार फीचर्स होच कोन वन एंट्री पर ट्रांजैक्शन। गोटे ट्रांजैक्शन ने केवल गोटे साइड रो गोटे अकाउंट ही से मेंटेन करो। से अकाउंट को टाइप रे हेतिबा दरकार ना कैश रिलेटेड हेतिबा दरकार, पर्सनल अकाउंट हेतिबा दरकार। एबे देखिबा असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट। ए सिस्टम रे आमे प्रॉफिट केमिति बाहर करबा। दीटा टाइप रो मेथड रोची, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड, कन्वर्जन मेथड। नॉर्मली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड यूजुअली यूज हेथाय, किंतु एबे आमे जो पढुचे ए जो सिंगल एंट्री सिस्टम एतेटा इंपोर्टेंट एबे पय आम पय नाही, आगु को आहुरी अछि आरो इंपोर्टेंट, किंतु एबे आमे जो पढिबे एबे कर इंपोर्टेंट भितरे
आमर डबल एंट्री बेसी इंपोर्टेंट रहिबो सिंगल एंट्री एतेटा इंपोर्टेंस तार नाही तथापि एबे आमे तार मेथड देखिबा एटी मु फॉर्मेट देछि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड रो लेफ्ट साइड रे हमर लायबिलिटीज रहिला राइट साइड रे हमर एसेट रहिला जा ए सब गुडा को हमर क्वेश्चन ने गिवन थिबो ताकू नेकी आमे क्लोजिंग कैपिटल बाहर करबा क्लोजिंग कैपिटल को नेले लेस करबा कोन ओपनिंग कैपिटल आउ जदि किसी कैपिटल मझरे इंट्रोड्यूस हे थाए ताकू लेस करबा सो दैट गोटे ईयर रो प्रॉफिट आमे ए मेथड रे पाई परिबा सिंगल एंट्री सिस्टम नॉर्मली छोटो छोटो बिजनेसेस यूज करंती कहबा जार ट्रांजैक्शन हो जार बिजनेस स्मॉल स्केल ऑपरेट हे थाए लार्ज स्केल पे एटा ठीक नु है एबे देखिबा डबल एंट्री सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम is the system under which each transaction is regarded to have twofold aspects and both the aspects are recorded to obtain complete record of dealing. Double entry system of bookkeeping adheres to the rule that for each transaction the debit amount must equal to the credit amount. Double entry system रे कौन रोचे आमे each transaction रो जो दीटा इफेक्ट रोचे दीटा अकाउंट जो अफेक्ट रोचे ताकू आमे रिकॉर्ड करथाओ सो दैट डेबिट और क्रेडिट रो अमाउंट ता इक्वल हेतिबा दरकार एठी आमे जो पढ़िथिला अकाउंटिंग कांसेप्ट एठी हमें मैचिंग कांसेप्ट अप्लाई करिबा एबे तार फीचर्स देखिबा two parties are involved one is the receiver and another is the giver the receiving party is debited and another party is credited equal effect each transaction should have an equal financial effect the debit amount should be equal to the credit amount. Separate legal entity. This accounting system records the transaction separately from its owner. Debit and credit. There are two aspects of recording any transaction, the debit aspect and the credit aspect. एटी कहूची कि डबल एंट्री सिस्टम रे डेबिट इक्वल टू क्रेडिट सबू आमे जो ट्रांजैक्शन गुडाक करिबा तार एंट्री रे हेइथिबा दरकार एबे जेमिति ओटे एग्जांपल नबा ओटे ग्रोसरी शॉप अछि से आज 5000 टंकार तार जो गुड्स रहला सोल्ड आउट कला कस्टमर को सोल्ड आउट कले ताको कोन मिलला कैश मिलला तो कैश कोन हला डेबिट हला कैश होचे एसेट हमरो तो एसेट बढ़िले कोन हबो डेबिट हला तो एठी तार गुड्स कमी गला माने गुड्स पळेला ना पळेले कोन हबो ना क्रेडिट हबो एसेट हमरो कमिले कोन हबो क्रेडिट हबो तो ए दीटा एंट्री हमरो बुक्स रे हला को सिस्टम रे ना डबल एंट्री सिस्टम रे डबल एंट्री सिस्टम always follows matching principles of accounting एबे हमें देखिवा basis of accounting system Business transactions are documented in the books of account according to one of three accounting bases: cash basis or receipt basis, Accural basis or mercantile basis, and hybrid basis. First, देखिवा cash or receipt basis. The cash basis of accounting is a method of accounting in which transactions are recorded in the books of account when cash is received and paid. Credit transactions such as credit purchases, sales are not recorded in the books of account under this method. एटी कहूची कि आमर जो बिजनेस रे जो ट्रांजैक्शन गुडाक रोहुची कैश ट्रांजैक्शन थाए क्रेडिट ट्रांजैक्शन थाए किना बिका हे थाए तो ए बेसिस रे हमें ओनली कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन गुडाक ही रेकॉर्ड करथा माने होची कि मु जेतेबेले गोटे जिनस बिक्री करछि जदि मते इमीडिएट कैश मिल जाउची जो डेट रे मिलुची हमें सेही डेट रो ट्रांजैक्शन ही रेकॉर्ड करछे
जदि मते इमीडिएट कैश मिलुनी किछटा टाइम पीरियड इंटरवल रे मते मिलुछि देन आमे ताको ए बेसिस रे रेकॉर्ड करू नाहु फॉर एग्जांपल नबा if a व्यक्ति receives payment for a cake in February but the sale was made in January the income is recorded in February when cash was received एडी कोची कि गोटे व्यक्ति शॉप अच्छे से केक डेलीवरी करथिला जनवरी रे किंतु ताको पेमेंट रिसीव हेई नथिला पेमेंट रिसीव होला फेब्रुआरी रे तो आमे को डेट तार ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करबा ना फेब्रुआरी रे जो पेमेंट हमको रिसीव हेचे सेही डेट तार ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करबा कैश बेसिस रे एक्यूरल और मर्केंटाइल बेसिस कोन This is the method of recording transaction by which revenues, costs, assets, and liabilities are reflected in accounts in the period in which they occur, even if these are not transacted in cash during the accounting period. This basis includes consideration relating to outstanding, prepaid, accrued, accrued means due but not received, and received in advance. एठी कहूची कि आम बिजनेस रे जेतेबेले रेवेन्यू जनरेट होची कि किसी पेमेंट इनकर होची कि किसी एसेट लायबिलिटी जेतेबेले आसुची आम बिजनेस को आम सेबे ही सेही डेट रो ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करबा ना कि हमको जेबे कैश मिलुची कैश मिलुथबा ट्रांजैक्शन को आम एठी रिकॉर्ड करबा नाही जेतेबेले हमर इनकम एक्सपेंसेस इनकर होची बिजनेस रे जो भी टाइम रे से टाइम रो ट्रांजैक्शन को हमें रिकॉर्ड करबा एग्जांपल जदि नबा सपोज गोटे कंपनी अछि तार गुड्स सेल करूची जनवरी रे किंतु पेमेंट मिलुची ताको फेब्रुआरी रे तो तार जो सेल करिक तार इनकम जनरेट हैला केबे जनवरी रे तो ए बेसिस रे हमें जनवरी रो ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करबा हम बुक्स ऑफ अकाउंट रे ना कि हमें फेब्रुआरी रे हम पेमेंट मिली छी बोली ना एक्यूरल बेसिस रे हमें हमर जेबे इनकम एक्सपेंसेस जनरेट होचे सेबे ही हमें रिकॉर्ड करि थाउ नॉर्मली बिजनेसेस गुडा को एक्यूरल और जो कोचे मर्केंटाइल बेसिस ही फॉलो करंते अदरवाइज जदि से कैश बेसिस फॉलो करिवे देन तांगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर ठीक से हेई परिबनी आ बिजनेस ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हेबो नाही एबे हमें देखिबा हाइब्रिड बेसिस द हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग is a system that combines features of both the cash basis and the accrual basis of accounting. It allows a business to use the cash method for certain transactions and the accrual method for others, typically to gain the benefits of simplicity and better financial reporting accuracy. किछटा बिजनेसेस रे हमें देखिबा किछटा ट्रांजैक्शन कैश बेसिस रे हेते किछटा एक्यूरल बेसिस रे मतलब आजी मु किछटा मोर कंपनी रु प्रोडक्ट सेल करिछि 50,000 रो वैल्यू रे मते संग संग पैसा मिली अछि आ किछटा प्रोडक्ट मु सेल करिछि ताको क्रेडिट रे बाकी रे ताको सेल करिछि मते पैसा मिली नै तो आमे ताको एक्यूरल बेसिस नै ताउ तो एक्यूरल और कैश बेसिस मिसी की हाइब्रिड बेसिस हेथाय बे आमे जानिबा रूल्स और प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम एबेठू अप टू अकाउंटिंग एन पर्यंत एटा ही हमर होची मेन फंडा जहा को धर के आमे अकाउंटिंग रे जत्ते की भी मु कहितली प्रोसेस थिला जो जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट बनेबार सबु गुडा को आरी ऊपर ही बेसिस अटे कहीं ना आमे फर्स्ट जानिबा दरकार अकाउंट कोन केतटा टाइप रो अकाउंट रही छि कोन अकाउंट रे डेबिट क्रेडिट रो पोजीशन कोन रहूची ए सबु गुडा को जानिबा दरकार आकु जानिले ही आमे ठीक से जो अकाउंटिंग रो प्रोसेस गुडा को करि परिबा एबे आमे पढ़िबा कोन ना ट्रेडिशनल और ब्रिटिश अप्रोच रे अकाउंट्स को केमिति डिवाइड करा हिचे ट्रेडिशनल ब्रिटिश अप्रोच रे
तीनटा टाइप रो हमर अकाउंट अछि पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट मु आउ थरे कहि दोछि ए तीनटा अकाउंट रो माने कोन पर्सनल अकाउंट related to persons whether it is artificial persons or representative persons real account related to assets nominal account related to expenses incomes gains losses तो एबे पर्सनल अकाउंट रे देखिबा डेबिट रे कोन हबो क्रेडिट रे कोन हबो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर पर्सनल अकाउंट रे डेबिट कोन हबो ना जे रिसीव करिवो क्रेडिट कोन ना जे दबो सेमती रियल अकाउंट रे डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोस आउट डेबिट रे जहा आसुछि क्रेडिट कोन जहा जाउछि under nominal account debit all expenses and losses credit all incomes and gains ये हैला हमर कोन ना ट्रेडिशनल और ब्रिटिश अप्रोच अनुसार अकाउंट कोन रहिला आ तार डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट कोन रहिबो एबे देखिबा मॉडर्न और अमेरिकन अप्रोच हिसाब रे कोन रहिछि सेमति तार डेबिट क्रेडिट रहिछि किंतु एठी कोन कहबा एठी टिके अलग रहबो सेठी हमें जदी पर्सनल रियल नॉमिनल पढुथिले एठी हमें जो टर्म गुडा का अकाउंट से यूज होछि तार इफेक्ट कोन रहिबो डेबिट क्रेडिट रे पढिबा कैपिटल जदी इंक्रीज होछि तो क्रेडिट हबो जदी डिक्रीज होछि डेबिट हबो लायबिलिटी सेमती इंक्रीज हेले क्रेडिट हबो डिक्रीज हेले डेबिट हबो एसेट इंक्रीज हेले डेबिट हबो डिक्रीज हेले क्रेडिट हबो इनकम इंक्रीज हेले क्रेडिट हबो डिक्रीज हेले डेबिट हबो एक्सपेंसेस इंक्रीज हेले डेबिट हबो डिक्रीज हेले क्रेडिट हबो तो एठी डेबिट कोन कोन हबो इंक्रीज हेले मु कहि दोछि एसेट हबो आ एक्सपेंसेस हबो इंक्रीज हेले क्रेडिट कोन कोन हबो कैपिटल हबो लायबिलिटी हबो इनकम हबो जो दीटा अप्रोच हमर रहिला ताको हमें ठीक से पढ़ी की जानिबा दरकार आको जानिबा पर ही हमें जहा जहा भी हमर नेक्स्ट जो अकाउंटिंग इक्वेशन केमदे फॉर्मेशन हबो ताको जानि परिबा कारण आको पढ़िले त हमें जानि परिबा ना अकाउंट कोन अछि जो मु तीनटा टाइप रा अकाउंट कहिछि आ एसेट लायबिलिटी एक्सपेंसेस कैपिटल कोन रहिछि जो ट्रांजैक्शन गुडा करथिबो ता भीतर हमें ताको बाहर करिबा से अकाउंट गुडा को बाछि की तार इफेक्ट कोन हबो जेमति मु एठी इंक्रीज डिक्रीज रो कथा कहिछि ताकू हमें जानिबा दरकार तो नेक्स्ट क्लास रे हम अकाउंटिंग इक्वेशन ऊपर देखिबा।